Okay. So last time fluid kinematics का एक सेशन मैंने लिया था, अगर आपको याद हो तो. It was all about the types of flow or classification of flow. So can anyone tell me the types of flow? Anyone remembers? Sir, steady and unsteady flow, Steady uniform, flow First of all, and it steady was flow. okay. Good. First of all, it was Uniform, steady and non-uniform. unsteady flow. It is very 1D, important 2D, because 3D. okay, 1D, 2D, 3D, uniform, non-uniform, then Turbulent, laminar. Rotational, very irrotational. good, rotational, laminar and turbulent, irrotational. then compressible and incompressible. Very good. Okay, so I'm not going to take the classification flow again. Okay, but do remember that steady and unsteady flow deals with time. Uniform and non-uniform flow deals with space. Okay, laminar and turbulent flow deals with Reynolds number. Okay, then 1D, 2D, 3D flow depends on the direction of the particle. Okay, in what directions the particles are traveling. Compressible, incompressible deals with the density. Fine, ultimately density is what matters in 1D compressible and incompressible flow. Okay, if density changes, it happens in case of gases only, of course, then the flow can be called as compressible. Otherwise, in liquids, we have incompressible flow all in the way. Okay. Then rotational and irrotational flow is also there. Okay, you can read it from any of the reference book. It is given very nicely. Anyway, we'll jump to the next topic. Very important. The topic is continuity equation. Hope the screen is visible. Continuity equation. We have two forms of continuity equation. One is in 1D and second is in 3D. We'll start with 1D. Okay. Suppose uh, suppose this is one pipe. Okay. This is a pipe of some length and diameter. Okay. So ध्यान से समझना. Suppose some liquid is entering here, which we call it as inflow. And the same thing is getting discharged out from this end, which we call it as outflow. Okay, so continuity equation in a simple language is that for a particular flow in pipe, inflow is always equal to outflow. Agree? पहले बताओ, agree करते हैं आप लोग? Yes, sir. हाँ, Yes, sure. sir. Of course, there are some assumptions like there is no leakage in the pipe या कोई और पैरामीटर नहीं है जिससे वॉल्यूम या डेंसिटी चेंज हो सके. ओके, इट इज अ completely closed system pipe. Okay, now this inflow and outflow technically is nothing but the rate of change of mass. Rate of change of mass. This inflow and outflow. That means rate of change of mass entering the pipe will be equal to the rate of change of mass leaving the pipe. That means suppose M1 is rate of change of mass entering and M2 is rate of change of mass leaving, then according to continuity equation M1 will be equal to M2. Okay, समझ आ रहा है? Simple है. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now Yes, what sir. is rate of change of mass? Rate of change of mass exactly क्या होता है? तो rate of change of mass you can tell as mass per unit time. जैसे rate of change of velocity क्या होता है? Velocity. वैसे rate of change of mass means mass upon time. So mass upon time at section 1 will be equal to mass upon time at section 2. Okay. Now थोड़ा modify करते हैं इसको. देखो तो मास को क्या लिख सकते हैं? कैन इट बी रिटर्न एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम गाइस? Yes, sir. है ना? Yes, sir. चैप्टर 1. ओके, मास कैन बी रिटर्न एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. वॉल्यूम कैन बी रिटर्न एज एरिया इनटू डेप्थ. अग्री? Yes, sir. सेक्शन 1 Yes, sir. Yes, sir. एरिया इनटू डेप्थ बोलो या लेंथ बोलो, जो बोलना है. ओके, मैं यूनिट सेम रख रहा हूँ.
Okay. Now from this distance upon time, को क्या बोल सकते हैं? Velocity. Velocity. Very Velocity. good. Velocity. So rho AV at section 1 will be equal to rho Velocity. AV at section 2. Sorry. At section 2. Okay. और थोड़ा इसको और मॉडिफाई करें तो रो 1 A1 V1 will be equal to rho 2 A2 V2, which is in general the continuity equation for any type of fluid. In general, the continuity equation for any type of fluid. याद रखना rho 1 A1 V1 will be equal to rho 2 A2 V2. But now for liquids में क्या होगा, कोई बता सकता है इसमें? अगर लिक्विड्स की स्पेसिफिकली बात करें सर डेंसिटी अलग अलग होगी. Density सर same. डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती. Density. Density same होगा. सो इन केस ऑफ लिक्विड्स क्या होगा, जैसे इस पाइप में एक तरफ से आपने लिक्विड वाटर डाला है तो दूसरे एंड से ऑयल नहीं निकल सकता है, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल. पानी डालने से दूध तो निकलेगा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो इन केस ऑफ लिक्विड्स, फॉर लिक्विड्स वी हैव incompressible flow. They have incompressible flow, right? That means rho 1 will be equal to rho 2 always. So in that case, the most simplest form of continuity equation जो आपको अभी याद रखना है becomes A1 V1 equal to A2 V2. Agree? समझा? यस सर. यस Okay. सर. Yes, sir. मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, थोड़ा सा. आपको लगे बहुत फास्ट है तो यू कैन स्टॉप मी एनीवेयर. अब इसमें जो टर्म है ना एरिया इनटू वेलोसिटी, दिस एरिया इनटू वेलोसिटी को डिनोट करते हैं क्यू से. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, याद रखना. क्यू, वेयर क्यू इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज. आपने रीटा मैम या जैन सर उनके लेक्चर्स में ये टर्म काफी सुना होगा, आई एम श्योर. सो दिस इज द commencement of this term. काइनेमेटिक्स से ये टर्म शुरू होता है एक्चुअली, डिस्चार्ज. ओके. और डिस्चार्ज का यूनिट आप देखें तो क्या होगा, एरिया इनटू वेलोसिटी. एरिया इज मीटर स्क्वायर इनटू वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड, दिस विच इज कॉल्ड एज क्यूमेक. क्या बोलते हैं, क्यूमेक, CUMEC, क्यूमेक. किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अनलेस सम प्रॉब्लम इज गिवन, क्योंकि ये जो होगा मेरा नोट्स ये मैं शेयर कर दूंगा आपके ऊपर, ठीक है. सो मीटर के ऊपर सेकंड इज कॉल्ड एज क्यूमेक. अभी आप लोगों ने न्यूज में यू माइट हैव लिसन मैनी टाइम्स दैट ड्यूरिंग फ्लड और ड्यूरिंग रेनी सीजन न्यूज पे आता है ना कि दिस मच लैक क्यूसेक पानी रिलीज किया है, सुना है? यस सर. यस Yes, सर. sir. क्यूसेक यूज होता है जनरली, लोकली क्यूसेक यूज होता है, क्यूमेक यूज नहीं होता है. क्यूमेक इज ऐसा यूनिट दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड, बट लोकली वी यूज क्यूसेक. क्यूसेक क्या है, कोई बता सकता है? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. नहीं, क्यूसेक इज फीट क्यूब पर Feet सेकंड. cube per second. फीट क्यूब पर सेकंड इज क्यूसेक. Okay, so locally we use feet cube per second, which is called as cubic. So now in the news, if it comes that 1 lakh cubic water has been released from the gates. Gates जो बोलते हैं ना, गेट क्या होता है, डैम के ऊपर जो स्पिलवे होता है उसमें गेट्स होते हैं. तो गेट जितने ओपन करेंगे ना उतना एरिया मिलेगा और उसके हिसाब से डिस्चार्ज मिलेगा, इसलिए ऐसा बोला जाता है. तो आपको पूछा जाए कि 1 लाख क्यूसेक इज इक्वल टू हाउ मेनी क्यूमेक, तो आप बता सकते हैं व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन 1 क्यूमेक. पहले ये बता, क्यूमेक बड़ा होगा या क्यूसेक? Qmac. क्यूमेक बड़ा होगा. क्यूसेक. मीटर बड़ा होगा ना फीट से हमेशा. कितना बड़ा, कोई बता सकता है 1 क्यूमेक कितने क्यूसेक होंगे? 3 times above. 3 टाइम 3.828. 3.28 लाख क्यूब करना 3.8 पड़ेगा. is to 3 times.
तो 3.28 का क्यूब 3.28 का क्यूब करना पड़ेगा. ओके. 35.29. हाँ, जो भी आता हो, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूमेक एंड क्यूसेक. देखो, ये भी एक वजह है, ये एक बार इंटरव्यू में पूछा था तो मैं शेयर करता हूँ कि वाई लोकली क्यूसेक इज यूज एंड नॉट क्यूमेक. ओके. तो क्यूसेक इसलिए यूज होता है क्योंकि क्यूसेक स्मॉलर यूनिट है. अगर 1 लाख क्यूसेक पानी रिलीज किया है, उसको क्यूमेक में अगर बताएंगे तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, है ना. और ये न्यूज़ पे या ऐसे, व्हाई वी नीड टू डिसेमिनेट दिस इंफॉर्मेशन अमंग द पीपल, बिकॉज जो विलेजर्स होते हैं, जो मेन कैनाल के आसपास होते हैं, दे नीड टू इवैक्यूएट ड्यूरिंग द फ्लड सिचुएशन. ओके. इसलिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है कि कैसे पब्लिक को अवेयर किया जाए कि भाई बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है. दैट्स व्हाई वी यूज क्यूसेक, जिसमें वैल्यू बहुत बड़ी लगेगी. अब इफ द सेम वैल्यू इज डिस्क्राइब्ड इन क्यूमेक, the value will go much smaller. Okay, that's why we use QSEC. Anyway, दूसरी चीज, so one important term that we learned is Q is equal to A into V. Very simple है. अब continued equation in a statement is very simple, that discharge remains constant. Discharge remain constant at each section. At each section. This is continued equation for liquids. Okay. Very simple, याद रखना. इसका बेस्ट एग्जांपल आई लेट यू नो. सपोज यू आर वॉशिंग योर व्हीकल विद अ पाइप. आपने पाइप, यू आर कनेक्टेड विद सम टैप एंड यू आर वॉशिंग इट विद द pipe, your vehicle, your bike or scooter or something. Okay. And where you have opened the tap. Once you have opened the tap, that means discharge that is coming out of the tap remains constant, which is continuity equation. Now to wash your vehicle, what preferably do you do? आप लोग क्या करते हो? यू यूज योर थंब. जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पाइप का, यू यूज योर थंब टू स्मॉलर लोअर डाउन द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया. उससे क्या हो जाता है? वेलोसिटी बढ़ जाती वेलोसिटी है. बढ़ता है. ठीक है. तो उससे वेलोसिटी बढ़ जाती बढ़, इट इंक्रीज द वेलोसिटी. कॉल आ रहा है, जस्ट is the screen visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, यस sir. सर. तो डिस्चार्ज में क्या कह रहा था? हाँ. तो क्या होता है कि जब आप एरिया कम करते हो पाइप का, तो वेलोसिटी अल्टीमेटली बढ़ जाती है. तो यू कैन सी दिस डिस्चार्ज इज कांस्टेंट. If you lower down this area, then ultimately your velocity will increase. This is the simplest example of continuity equation. Okay, अंदर समझ आया guys? यस सर. Okay. Yes, Yes, sir. sir. तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. राइट डाउन. For example purpose, do remember one thing. For example purpose, you need to remember the continuity equation as inflow is equal to outflow. Okay, I repeat, inflow is equal to outflow. This is how you will remember the continuity equation for the examples, problem solving. Okay. Okay. Draw this pipe network. Draw this pipe network. So section 1, where inflow is there, is having two values. One is 30 centimeter and second one is 2.5 meter per second. So 30 centimeter is obviously the diameter, understood,
and 2.5 meters per second is the corresponding velocity at that section. Okay. Section 2 again is having two corresponding values, and section 3 is having velocity as 3.5 meter per second, and diameter is to be found out. Okay, draw this network fast. Done, Yes. guys? Okay. So this Yes, is sir. the pipe network having three sections. Okay, where one unknown is there, that is diameter at section 3. So बता सकता है what how to proceed? Can anyone tell me how to proceed? Yes. Sir, A1 V1 equals to A1 A2 V1 V2 is plus equal A3 to V3. Very good, very good. So as I told you, for problem solving, this is the equation. Inflow equal to outflow. Here the inflow takes place at section 1, only section 1. Okay. So Q1 discharge के terms में लिखते हैं always. Q1 will be equal to total outflow. That means Q2 plus Q3. Once you are ready with the equation, with the right equation, of course, then the problem solving is very much easier. We know that discharge is A1 V1 will be equal to A2 V2 plus A3 V3. Okay, and area of the pipe, any pipe in general, will be pi by 4 d square. Okay, so let me know the value of d3. चलो fast. बताओ क्या है? 0.24. हो भी गया? Okay, I'm not sure about the answer because थोड़ा hypothetical question है. मैंने खुद दिया है तो let's check. क्या आ रहा है? 24 सेंटीमीटर. Yes, sir. Okay. Any other answer? और कोई सॉल्व कर रहा है कि नहीं भाई? यस सर कर रहे हैं. Yes, sir. करो 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 आराम से. ये मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता चल रहा है, चल पाएगा कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं ये सेशन? Yes, sir. Yes, sir. हो रहा है? Yes sir. ठीक है, रिकॉर्डिंग हो जाए तो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट जॉइंड और हु आर नॉट एबल टू जॉइन उनसे शेयर कर सका. Sir, 17.34. 17.34. Okay, contradictions. Any other answer? देखो डी एन 17.34. okay, Sir, so let's 17.34. सर so let's 17 check this as fine. Okay, so 17.34 is the final answer. एक चीज हमेशा याद रखना, the diameter, the smaller is the diameter, higher will be the velocity. Okay, they are inversely proportional always. Okay, समझ आ गया guys? Done? Yes sir. Yes, sir. Any query? Any doubt? No, sir. Okay, नो सर. so let's jump to the difficult part.
continued equation in 3D. continued equation in 3D. अब 3D जब आता है, याद रखना कभी भी 3 dimensional या 2 dimensional things if it arise, that means we are jumping into the calculus. We are jumping into the calculus और vector forms. अब वेक्टर फॉर्म्स का थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आई जे एंड के, ये क्या है पता है आप लोगों को? व्हाट इज आई जे एंड के? Unit Y, Z vector direction. X, Y, Z direction. These are the these are the unit vectors. इसको बोलते हैं unit vectors in respective x, y and z direction. I stands for value in x direction. J represents the value in y direction and K represents the value in z direction respectively. Okay, this is the first thing that you should remember. Second, suppose some three-dimensional flow is there. Suppose then U, V and W. U, V and W represents the velocity vectors in x, y and z direction. Yeah, the second thing. Okay, U, V and W. U denotes velocity in x direction, V denotes velocity in y direction and W denotes velocity in z direction. Okay, guys. Yes, Okay. sir. Yes, Okay. sir. Then the final resultant velocity vector, capital V, suppose उसको अगर लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ मैं? If U, V, W are the components, you know, these are the UI cap, components of velocity. हाँ, तो UI what cap will be plus the VJ cap. resultant velocity? हाँ, बोलो कौन? UI cap plus VJ cap plus Very good. अपने VJ कैप cap. वेप नहीं लगाते, वो स्कूल में होता था. तो this is UI plus VJ plus WK. This is the final form of velocity vector, resultant velocity vector है ना. और इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो क्या होगा पता है? Under root Under of root of Under root U square Very plus V good. square plus W square. Very good. So you remember these things. Okay. सबको पता है ये चीजें? मैंने एक्चुअली पता नहीं भी हो तो दिस इज इनफ टू रिमेम्बर. This much information is enough to get the things done. Okay, समझ आ गया guys? Yes, sir. yes, sir. Okay. अब थोड़ा है ना बाउंसर जाएगा. ठीक है, ध्यान से देखना. सपोज देयर इज अ फ्लूइड एलिमेंट. नया पेज ले लेता हूँ. सपोज 3 dimensional फ्लूइड एलिमेंट है, क्यूबिकल. ध्यान से देख. ओके, नाम दे देते हैं ए बी सी टी ई एफ जी एच. 3 dimensional fluid element है. ओके, and it is infinitesimally small element. That means उसकी जो sides है वो है dx, dy and dz respectively. Horizontal मैंने ले लिया dx, vertical ले लिया dy and जो third side है which is coming out of this surface is taken as dz. Very small element is there. ठीक है. So here, suppose 3 dimensional flow is there. That means flow is coming from all the 3 direction as an inflow, and flow is getting out from all the 3 direction as outflow. तो हम लोग कोई भी first of all will choose any one direction. Suppose x direction. Suppose in x direction the mass entering is m1. Okay, mass entering is m1. अब ये मैंने पहले भी आपको समझाया है. Again, and mass leaving. अब इस केस में can you say that if mass entering is m1 then the mass leaving in x direction will be same as m1? No, sir. क्वेश्चन समझ आया पहले तो?
what I'm saying that this is a three dimensional flow. Okay, हर डायरेक्शन से फ्लो आ रहा है. So can I conclude that if in x direction mass of fluid entering is m1, then the mass leaving the x direction will be same as m1? Yes or no? No. No, sir. Very good. No. नो तो सर. देखो यहाँ पर the mass that is leaving the direction वो क्या होगा. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक assumption लेता हूँ. Suppose rate of change of mass in x direction is del m by del x. सिंपल सा assumption है, आपने पहले भी शायद कुछ डेरिवेशन में किया होगा, और मैं समझा देता हूँ. What is del m by del x? Del m by del x is suppose like dv by dt. What is dv by dt? Rate of change of velocity per unit time, है ना. मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा. वैसे del m by del x is rate of change of mass by traveling unit x direction distance. ओके, और डेल क्यों यूज किया है, डी क्यों यूज नहीं किया है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. वी विल ऑलवेज गो फॉर द पार्शियल डिफरेंशिएशन 3D में ऑलवेज, बिकॉज कौन सा डायरेक्शन से इफेक्ट आ रहा हो हमको पता नहीं है. सो इट इज ऑलवेज बेटर एंड सेफ टू यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन. ठीक है. सो सपोज डेल एम बाय डेल एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन. ओके, m1 ले लेते हैं इसको क्योंकि मैंने m1 लिया हुआ है. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना कि by traveling unit x distance, the change in mass is del m1 by del x. agree, है ना. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने यहाँ से यहाँ निकलने में, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है dx इन x डायरेक्शन. ठीक है. तो अगर dx जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो what will be the total change? So total change will be del m by del x into dx. agree guys? hello. Yes, sir. ओके, सर थोड़ा बाउंस सर हो जाएगा, रिपीट मैंने करेंगे पहले ही बोला प्लीज था. एक बार. हम लोग, मैं रिपीट करूंगा एक बार, ठीक है. पहले आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस. देखो ये क्या आया, दिस इज द टोटल चेंज जो dx जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मिला. तो फाइनली जो आउटफ्लो होगा, फाइनल आउटफ्लो वो कितना होगा, तो वो होगा इनिशियल मास प्लस टोटल चेंज इन द मास. दैट मीन्स m1 plus del m1 by del x into dx. This is the final outflow in x direction. रिपीट करते हैं, ठीक है, फिर से करते हैं, ध्यान से देखिए. ये थोड़ा बाउंसर है, ये समझ आ गया तो इट इज वेरी सिंपल. we have assumed a three dimensional flow of which first we have taken into picture the x direction, only one direction, that is x direction. okay, अब x direction है, that means it will be parallel to dx, पैरेलल टू dx ट्रैवल करेगा. ठीक है. तो सपोज मास एंटरिंग, मास जब भी मैं बोलता हूँ दैट मीन्स इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. ऑलवेज रिमेंबर इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. ठीक है. तो मास एंटरिंग इज सपोज m1 इन x डायरेक्शन and we do not know what mass is leaving the x direction because it is a three dimensional flow. तो उसके लिए मैंने क्या किया, I have assumed that suppose the rate of change of mass in x direction is del m by del x. और ये दिस इज कम्प्लीटली ट्रू. हाँ, मैंने देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या रखा है, x रखा है. दैट मीन्स जो भी मास कहीं और डायरेक्शन से भी आया, हम लोग कौन सा लेंगे मास, दैट इज गेटिंग चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन. ठीक है. तो डेल एम बाय डेल एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. दैट मीन्स रेट चेंज इन मास पर यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल्ड. कौन सा डिस्टेंस, x डिस्टेंस. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यूनिट x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, तो उसमें चेंज कितना आएगा, उसमें चेंज आएगा डेल एम बाय डेल एक्स. पर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो पूरा बाहर निकलने से पहले नेक्स्ट डायरेक्शन, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज dx. तो dx ट्रैवल करने से कितना टोटल चेंज आएगा, तो दिस इज क्रॉस, मैंने ट्राइंगल रूल ही लगाया. तो दिस इज डेल एम वन बाय डेल एक्स
into dx. देखो यूनिट वाइज सेम करने के लिए भी ये जरूरी है. यू कैन नॉट सिंपली कीप डेल एम बाय डेल एक्स. इंटू dx लगाना जरूरी है, तभी जाके यूनिट सेम होगा, राइट. सो दिस इज द टोटल चेंज दैट वी आर गेटिंग इन x डायरेक्शन. सो फाइनल आउटफ्लो कितना होगा? तो इनिशियल जो एंटर हुआ प्लस अंदर जितना चेंज आया, दैट विल बी द फाइनल आउटफ्लो. जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा ही हो, कम भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है ना. सो दैट्स हाउ वी गॉट द वैल्यू एज m1 प्लस डेल m1 बाय डेल x इनटू dx. समझ आया guys? Yes, sir. हाँ, थोड़ा थोड़ा देखो, पहली बार वी आर Yes, sir. डीलिंग विद कैलकुलस. ओके, तो इट माइट बी ट्रबल फॉर यू. ओके, आप लोग, मैं ये नोट्स आपसे शेयर कर लूंगा, तो एक बार रिवाइज करोगे तो समझ आ जाएगा. ओके, बट द मेथड विच आई हैव शोन इज द बेस्ट वन. आप कोई रेफरेंस बुक या कोई भी बुक लोगे ना, उसमें ऐसे नहीं समझा है. ओके, उनकी मेथड थोड़ी अलग है. एनीवे, सब ध्यान से देखना. हमने ये तो पता कर लिया कि व्हाट इज इनफ्लो एंड व्हाट इज आउटफ्लो. नाउ दिस m1, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. इसको रोम बोलते हैं कुछ कुछ बुक्स में, रोम. दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या होगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज मास अपॉन टाइम. अगेन वही का वही रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है. एंड मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज एरिया इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो दिस विल बी रो ए इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी वेलोसिटी, है ना. Velocity. Velocity. ओके, Yes. वेलोसिटी. एंड वेलोसिटी यहाँ पर मैं रखूंगा u. व्हाई u? X direction. X direction. We are dealing with the x direction. Okay. So this will be rho into u into. Now can you tell me what will be the area of, area क्या होगा? अब मुझे बता. dz into dy. dz into dy. Very good. dz into, देखो ध्यान से देखो, x डायरेक्शन में जब फ्लो है, that means it is entering this area, है ना. This will be the cross section area in which the mass is entering perpendicularly, right? और इसका एरिया क्या होगा? ए बी इंटू बी सी और डी जेड इंटू डी वाई. वेरी गुड, समझ आया ये. सो दिस विल बी डी Yes, वाई sir. इंटू Yes, sir. डी जेड. ओके. ओके, वेरी गुड. सो दिस इज m1 सिंपली. अब क्या होगा, ध्यान से देखना कि नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, नेट कितना होगा? तो नेट होगा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. ओके, तो इनफ्लो रखते हैं. इनफ्लो क्या था? m1 सिंपली. एंड आउटफ्लो क्या था? m1 प्लस डेल m1 बाय डेल x इंटू dx, राइट, इज इक्वल टू m1 कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट माइनस डेल m1 बाय डेल x इंटू dx. ओके, इज इक्वल टू माइनस. अब मैं वैल्यू रखता हूँ, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ m1 इज रो u dy dz इंटू dx. थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं. सो यहाँ पर dy dz ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं. माइनस बाहर. एक मिनट, एक कॉल आ रहा है. Okay, am I audible, guys? Yes, sir. Yes, बीच sir. में कॉल आ रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है. सो व्हाट फाइनली वी विल गेट इज दिस. नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास in x direction is minus del by del x of rho u
into dx dy dz. ऐसे ही similarly in y and z डायरेक्शन. कोई बता सकता है डायरेक्टली कि y और z डायरेक्शन में नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना होगा? y में कितना होगा? माइनस डेल बाय क्या होगा? Del Del V. Y. Del Del Y. Y. डेल बाय. वेरी गुड. इन द ब्रैकेट क्या होगा? Rho Rho into V. W. रो v होगा. Sorry, सही. W. y डायरेक्शन है तो v होगा. बाकी सेम रहेगा बिकॉज dx dy dz तो साइड्स है क्यूब की. ठीक है, ये हो गया y डायरेक्शन. ऐसे z डायरेक्शन में क्या होगा बताओ? डेल बाय डेल z Z. इंटू रो w हो जाएगा. राइट. तो dx dy dz. तो टोटल 3 डायमेंशनल है. तो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन 3 डायरेक्शंस इन 3D क्या होगा? तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लेता हूँ. ब्रैकेट में हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू ब्रैकेट ओवर इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड. ओके, इज इक्वल टू डेल एम बाय डेल टी. ऐसे लिख सकता हूँ ना. ये क्या है? नेट टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन 3 डायरेक्शन. और नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होता क्या है? इट इज नथिंग बट डेल एम बाय डेल टी. इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा. तो डेल एम बाय डेल टी को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो डेल बाय डेल टी ऑफ इन द ब्रैकेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अग्री गई? समझ Yes, आ sir. रही है? Yes, sir. थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ना. Yes, sir. तो फिर क्या होगा? डेल बाय डेल टी ऑफ इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है? dx dy dz. डी Dx एक्स dy डी वाई dz. डी जेड. ठीक है, वो तो कांस्टेंट ही है. तो देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा जो वॉल्यूम है, डी एक्स डी वाई डी जेड, और यहाँ से डी एक्स डी वाई डी जेड ऐसे कैंसिल. राइट. तो क्या बचा? एक मिनट. देखो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता. ठीक है, इसलिए कोई भी आप शेप ले सकते थे. तो क्या बचा? माइनस ऑफ डेल ऑफ रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल ऑफ डेल बाय डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल रो बाय डेल टी. अब यहाँ पर इफ द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल अगर इनकम्प्रेसिबल है दैट मीन्स लिक्विड्स है, तो क्या चेंज आएगा? कोई बता सकता है? Rho constant होगा तो del Rho rho by del नहीं to होगा. 0. हाँ, रो नहीं होगा. नहीं, रो कांस्टेंट होगा. राइट. अगर रो कांस्टेंट है दैट मीन्स डेल रो बाय डेल टी विल बी जीरो. है ना? राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ. डेल रो बाय डेल टी विल बी जीरो. कांस्टेंट है इसलिए. राइट. अब देखो, तो डेल रो बाय डेल टी विल बी जीरो. तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ जाएगा जीरो. और यहाँ पर जितने भी वी हैव द डेंसिटीज इन ईच ऑफ द टर्म्स, तो इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट वो कॉमन निकल के बाहर आ जाएंगे, और बाहर यहाँ पर जीरो के नीचे जाके जीरो हो जाएंगे. अग्री गाइस? Yes. है ना? Yes. तो फाइनली द कंटीन्यूड इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो विल बी सिंपली डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल z इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ कंटीन्यूड इक्वेशन इन 3D. समझ आया गाइस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. लिखने की तो जरूरत नहीं है. तो ओके, तो याद रखना फॉर एनी फ्लो
वो फ्लो तभी पॉसिबल है इफ इट फॉलोज कंटिन्यूटी इक्वेशन ना, ये याद रखना। अगर ऐसा पूछा जाए कि चेक चेक वेदर द फ्लो इज पॉसिबल और नॉट, देन यू नीड टू चेक दिस कंटिन्यूटी इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड पूरा चेक करके देखना है कि वेदर इट फॉलोज द कंटिन्यूटी इक्वेशन और नॉट, जीरो आ रहा है कि नहीं। ओके, समझ आ गया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. कुछ एग्जांपल करते हैं, राइट? एग्जांपल 2 है ना, for velocity vector v is equal to x square y I plus y square z j minus 2xyz plus yz square k cap. प्रूव दैट कुछ भी आ सकता है। प्रूव दैट इट फॉलोज कंटिन्यूटी इक्वेशन, ऐसा भी आ सकता है या ऐसा भी आ सकता है। प्रूव दैट इट इज अ पॉसिबल केस ऑफ स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। स्टेडी एंड इनकम ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट। सो टेल मी हाउ विल यू प्रोसीड? So U, V, and W. It is वेरी true गुड। also. देखो, Del U by del कंटिन्यूटी, X. वेरी गुड, कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए वी नीड ओनली 3 पैरामीटर्स, दैट इज u v and w। अब यहाँ पर u v and w मैंने आपको पहले ही आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू i विल बी योर x डायरेक्शन पैरामीटर, दैट इज u। ऐसे ये होगा v और ये पूरा वैल्यू होगा z, दैट मीन्स u। So your u will be x square y, your v will be y square z, and your w will be minus, साथ में लेना नहीं भूलना, 2xyz plus yz square. Okay, now you just need to check whether del u by del x plus del v by del y plus del w by del z ये वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं। चलो ट्राई करो। डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है। व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग एनी टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाकी के टर्म कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, ठीक है। चलो, Yes, sir. Zero. अरे बाकी लोग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Zero. Yes, sir. ओके, आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस, प्लीज। सिंपल है। तो ये हो जाएगा Yes, sir. I will, sir. डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर जेड प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ माइनस 2xyz माइनस yz स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई का हो जाएगा 2xy, Plus, sir. क्या प्लस, क्यों प्लस, Minus माइनस ही हो। 2xyz plus yz square. नहीं, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया ना बेटा, Okay, sir. है ना। हाँ, तो 2xy प्लस ये हो जाएगा 2yz और ये हो जाएगा माइनस 2xy और ये हो जाएगा माइनस 2y, that will come out to be 0. Prove.
ओके समझ आया guys?